Yeah, so the way we're going to work is in these classes, we're dealing with past papers. We're going to start with March 25, and then we're going to move away backwards, right? So then it's going to be October 24, 23, 22, 21 ka variant, and then we'll do the June ke teen variants, and then March 24, and then the same goes with October 23 and backwards. ठीक है? Once we're done with these past papers, I think we will get reasonable time कि हम फिर जाके deal करेंगे some new questions which have not come as yet, but the link that I've shared with you YouTube का जिसके अंदर we have all these topical lectures and things like that. So I know those are very haphazard right now. It's not, in a very systematic way, but micro, macro, I think there is a breakdown. Otherwise, most of you have my Google Drive access. Plenty of material is over there. So we're going to deal with Bamford and Terry Cook की जो book है उसमें जो essays हैं, then we're going to start dealing with those along with workbook and all of those. ठीक है जी. So one of the tricks that I'm using this year is since we have like such a great instrument, ChatGPT. So what I'm doing is I'm sort of looking at these question papers. I'm looking at the marking schemes, uploading those on the ChatGPT, giving some prompts and getting the best answer that we can get from there. उसको फिर students structure के अंदर converting them and then still seeing if it is keeping its essence, right? So I'm proofreading that, and that is something that I'm going to show you also. Trust me when I say this, examiners are, since they're all from all over the world, I feel paper 4 की जो checking है, that is much more lenient compared to paper 2 AS में जो तुम देख कर आए हो, right? So paper 4 के अंदर all we have to really take care of is that whatever the question is asking, you answer in that structure. Today we're going to practice that and with the days come. Um, तो हम उसके अंदर देखेंगे कि if you're able to answer majority of the stuff that the question is asking and then the evaluation. ठीक है, तो हमारा काफी ज्यादा फोकस उसके ऊपर होगा. So I think you're not going to have much difficulty with these paper since you have already done quite a lot. So let's go over this. March 2025, we're dealing with paper 42. That's your variant. Question के अंदर 3 sections हैं, 2 hours का paper है. That means you have about 40 minutes, including the time to read and everything. Section A obviously is a compulsory one. Case study you have to attempt, no choice. All right, all parts in it you have to attempt. Section B is microeconomics, 2 essays. You have to do one whole 20 mark ka essay hota hai. I'll tell you the breakdown when we come to it. Then section C is macroeconomics, 2 essays. You have to do one of them. वही same 20 marker. You're allowed to use calculator as such. You don't need it for paper 2. हो सकता है कि किसी छोटा मोटा कैलकुलेशन में आ जाए केस स्टडी के तो ठीक है बट फॉर योर पेपर 3 MCQs make sure you have it with you. Make sure that whenever you're answering, please start from the very first page and then move down your booklet. I would recommend do the case study first, time it to 40 minutes or less, 35, 40 minutes. Once the time is up, don't waste time, move on. Take it, whatever you've done, just do that, move on. Essays take a lot of time. If you attempt section B and C first, essays you don't even realize how much time it has taken and turns out that by the time you have last 20-25 minutes you move on to case study, you're going to mess the case study up because you're not going to read it effectively, right? So section A ko please attempt karo, practice karo in this month and find your sweet spot on this. फिर जब आप अपना आंसर लिखते हो मेक श्योर एवरी टाइम यू टर्न द पेज एक दफा साइड में लिख लिया करो कि क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 हर दफा एवरी टाइम यू फ्लिप अ पेज
please go in a series. The last thing we as examiner want is to look for the answer booklet के अंदर कि कहाँ उसका एकदम से jump कर गए हो, because the worst thing you do is, and I'm telling you, most of you do this, you've done this in AS also. For some reason, booklet खोलते के साथ ही you open the booklet on some random page, and then you start from there, and then it just completely messes up your series, right? And then जब scan होता है ना, तो scan होता है page number 1 से, and then it keeps on going. और फिर when you have your additional marking, additional answer sheet, make sure that you label it, because वो भी जब scan होती है तो examiners को बहुत haphazard मिलती है. So some of them will, everyone is going to look at your answers, but just imagine I've checked your answer, evaluation was missing, I gave you the mark, I moved on, but down the few pages, I realized कि ओ ये तो evaluation randomly कहीं बीच में घुसी हुई है, and it was for the first one. That's not going to work in your favor, right? He's going to check it, the examiner will check it, but it's not going to work in your favor because of the momentum, right? So be careful with that. So let's start. All right. Any questions you have, please make sure that you leave it on the chat. I'll check in the middle. तो शुरू करते हैं. You have you know this, right? 2025 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो whatever is coming is at least 2023, right? 2023 में जो हो रहा था दुनिया के अंदर, उसकी बेसिस के ऊपर तुम्हारा पेपर बनेगा. 2023 के अंदर वर्ल्ड वाइड देयर वाज हाई इन्फ्लेशन, right? So यहाँ पे we have an article. Let's go over this. Every section of the article is important. You want to read it very, very closely. So शुरू करते हैं. It's obviously the heading is telling us what is it about. It's China's population trend. I think we all know of some things about China. It's the second largest population in the world now, just taken over by India just a while ago, but very significant. 1.4 billion की population है, right? India is slightly above it, 0.4 something होगा उसका, या 0.5 तक आ गया होगा. And we all are aware of one child policy, but that's not no longer in place anymore. They have a very skewed population gender wise, and they want to fix things back, right? And we know that back in the day, China was known for cheap labor, but now it's not the case. Now it's known for the most skilled labor that you might have. पढ़ते हैं. China's economic miracle has been built on seamlessly supply of affordable labor of from the population of 1.4, right? We've seen it. In last 60 years, in the 60 years since it has experienced a population decline, China has become the world's largest population. Okay. There are increasing signs, however, that China is facing a labor force challenge. We know that is true. That is the problem that they're facing. Even though they have such a large population, um, this is what is going on. ठीक है. तो कहीं पे भी यहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू सी अ डेट ऑफ लाइक 2024. एवरीथिंग इज 2022, 2023. 2023 से ही आएगा तुम्हारा पेपर. इज मेड 2 years बिफोर, तो 2 years पहले जो भी न्यूज चल रही थी वो होगा. तो इट्स पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग. Its population is decreasing. I don't think that's a good right statement. I think the population growth rate might be falling, but the population is not declining. I am sure of that. Its population is decreasing. Its citizens are growing older, and the workforce that once came with few demands now want higher pay, more benefits, and better pension. Okay, so the local people are more demanding now because of the labor shortage, probably. So in 1979, China introduced a World Child Policy. ठीक है, उसने बड़ा population की growth rate को रोका है. It relaxed these restrictions in 2016, and couples are allowed to have 2 children instead of one. Lekin despite the government's attempt to persuade to have more kids, fewer are being born.
Recently, two cities have proposed cash incentive for parents to have a third child. Now they're paying for it, right? So these would continue until the child is 3 years old. So that's a good advantage that they're offering. But for some reason, it's not working, let's say. Economists have observed changes in China's population. When the number of younger population falls, okay, so जब आपकी नई population, young population कम हो रही है, innovation और entrepreneurship भी उसके साथ गिर रही है, ठीक है? And this is felt throughout the economy. As population ages, you know what that means? The aging population, people are getting more older. Investments and saving rates fall. So the more aging population you have, investment and saving rates fall. Hmm, that's interesting. I thought the younger kids do not save and they spend mostly. That's why your MPC is tends to be on the higher side. But chalo, this is probably from the point of view that once the population ages, then incomes are not coming as such, so they're living on their pensions, and so they have to spend most of the money, you know. The need for support for the elderly increases. Now, these are the problem of aging population. Um, Government debt rises and demand for social security grows. I think we all understand that there's a high government debt. And in fact, the young population, I think that's coming next, without enough workers, all this becomes a burden for the government and the country as the population would not be at its optimum. That's a nice word they've used, optimum. Um, O level के अंदर I remember talking about optimum. I think we have. So please Google Drive के ऊपर. You remember I said last 50 pages from our notes also, the class workbook and the lectures that I've uploaded. Please, please, please perfect yourself in it. Ratify if you need to. China's central government regards the view of economists as alarmist. Um, Sounds like alarmist, sounds like that they're sort of like raising bells, caution bells that, you know what, sort it out or you're going to get into trouble, right? It's recognized the days of a vast unskilled workforce are gone, like we talked about it just a while ago. The decreasing workforce has become a concern for policymaker who wants to see the export-oriented economy supported by more domestic consumption. Now, ये 2023 का है. I'm going to make a link of this with the current Trump's policies in 2025 and why China is going head to head with the Americans that you want to put tariffs on us, we're going to place tariffs on you. USA is 30% consumer of the world demand for goods and services. But Chinese are not worried, even though they are export-oriented economy, that most of their exports are going to the US. But they're not worried, and they're not worried because of this idea that they want the domestic people to take over the demand of the Americans. Now, Americans are just 3.5% of the global population, less than 400 million, right? So China ki to 1.4 billion, that means almost 1 billion ki zyada population hai. And because the country is doing well and the Chinese government is rich and the workforce is skilled and they are demanding good incomes, higher pays and benefits and pensions, so might as well convert that export into domestic consumption, and it's a win situation for them. Maybe not for the rest of the world. That's why the rest of the world is not retaliating as such. World policymakers want our sorry. World policymakers want our skilled workers assisted by technology. Okay, so ये वो जो alarmist बात हुई है ना, now, Chinese, they're saying, okay, fine, we don't have good labor coming and population is in distress. Population growth rate is falling. So, ये जो हमारे skilled workers हैं, if we give them good technology like AI and all of that stuff, good machines and all, so problem solved. They recognize that the need for an
internationally competitive labor force, there have been suggestions that China will have to begin raising the retirement age. I think O level se tumko pata hai, that increases the labor force. It also urgently needs to introduce other policies to encourage couples to have more children. Other policies, I don't know, that might be, we might need to think about it. अच्छा सा एक ग्राफ दिया है इन्होंने. What is this graph about? Let's take a look at it. The population crisis is a test of whether China can evolve from an economy built on the size of its workforce. पहले बहुत बड़ी अनस्किल्ड लार्ज पॉपुलेशन थी, उनसे आपने बहुत सारा काम कराया, अपने आप को एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया. अब आपके पास Uh, so they're saying built the size of its workforce to one based on its skills. I think that is the natural transition, right? Especially in the fields of automation and artificial intelligence. इसके पीछे भी मैं बता देता हूँ अभी. वो जो ट्रम्प का बंदा है विंस, and there were some very harsh statements which were made कि Chinese is a peasant economy or something like that, peasant workers. And the Chinese statement came that, you know what, we take pride that we are coming from a peasant economy. We were working in agriculture and we were doing like very like cheap labor stuff. But now that we have like so much advancement and skilled labor force and all of that, no wonder why Tesla and Apple and everyone's going. They're not going for cheap labor. They're going for a large pool of skilled workforce. And deep seek के बाद हमने देख भी लिया है कि Chinese have, in artificial intelligence, they've sort of like shown their nuclear test, right? कि we're here. अब ग्राफ को समझते हैं. ग्राफ के अंदर एनुअल पॉपुलेशन चेंज इन चाइना लिखा हुआ है. आई फाइंड दिस वेरी डिस्टर्बिंग. They should be calling it annual population rate of change or something like this, because this is misleading here. Because this is in percentage and this is showing what is happening to their population growth rate. And we can see जब one child policy लगाई थी तो there was a 6-7 years का एक delay. Maybe in the early years, the government might have given a little sort of like a breathing space, maybe, कि बहुत ज़्यादा harsh नहीं था. So that's why you had a little faster growing population growth rate, or they probably did not have the population reducing trick, right? Like the what do you call it? Contraceptives and enough education to the rest of China, because China is pretty large, right? So maybe that is why this still went up. And then it showed the effect with a little time delay. अब टू चाइल्ड पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हुआ है 2016 के अंदर. But what they're showing is that the trend is showing that this will keep on falling, but this is an estimate, right? So maybe there might be a time delay and might increase and might work. But हमने US के केस में देखा है that when the countries develop and people become more work oriented and career oriented, and economy flourishes like that, there is tendency for having even lesser kids. But you never know. Maybe one child policy sort of like, um, have sort of like brought this into their generation that, you know what, we want to have more kids. So you never know. This is all estimate. So one man's opinion. फिर उसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. 2 मार्क के लिए ये लोग कहते हैं, explain what is meant by an optimum population, right? Optimum का word हमने O level में भी किया है और अभी भी किया है. I'll explain it to you through a diagram. Optimum population का concept था क्या? So what we have is a population numbers over here, okay? And over here we take like GDP per capita, which in another simpler words mean income per head. Now, if your country has zero population, obviously GDP per head will be zero. There's nobody to make something or anything.
फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है, बिकॉज यू हैव एम्पल रिसोर्सेज, व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल collectively start producing and income per head increases because you have enough resources for yourself. And as the population grows, what happens is that based on the resources you have, your population sort of keeps on increasing and you reach an optimum population number. उसके बाद जब आपका population number continues to grow, what happens is that income per head starts to go down. So what this represents is how this would be the section of overpopulation, okay? And this would be for underpopulation because you have resources, and as the population grows, income per head increases. So we're actually making a comparison of population versus the resources and how it affects GDP per capita and increases your income per head. Okay? अब ये सिर्फ 2 मार्क का है, ठीक है? अब जो इसकी अभी तक जो प्री स्टैंडर्डाइजेशन, दैट मीन्स अभी तक जो इसकी आई है मार्किंग स्कीम, दैट इज टॉकिंग अबाउट दिस. The optimum size of population is one which, together with the existing natural resources, with the given state of technology, yields the highest income per capita in a country. You remember that point or the peaking point? Or the population at which the standard of life is at its maximum. This one is very generic, but it sort of like explains. The breakdown of two is not so clear. Mary personal opinion would have been, a little of this, a write up. An optimum population refers to an ideal number of people in a country that ensures the best possible balance between the available resources, economic output, and quality of life. It occurs when the population size is perfectly aligned with the resources available, leading to a maximum productivity and efficiency, efficient use of labor, capital, and other resources. An optimum population does not cause constraint on resources such as housing and social security services, while still ensuring economic growth and development. This is too expensive. I just want you to get an idea that जो भी इसका perfect marking scheme होगा, that has to talk about the perfect number of labor. मैं तो simple ये बोलूंगा, an optimum population refers to a number of population where the country has the highest GDP per capita. Okay. And at this point, the living standards will be at its highest. There will not be an over or an under population. Just like what I did in O levels for a 4 marker, मैं 2 marker के लिए वो चीज यहाँ पे बता दूंगा. But I hope you get the idea. I'm sure कि जब एग्जामिनर की मीटिंग हुई होगी for this paper, they must have said कि what if the kid makes the diagram and explains this concept? I think it's a perfectly complementing diagram. They would mark it also. It makes perfect sense. यूजली क्या होता है कि मार्किंग स्कीम इज ऑन द एवरेज के जो वो स्टार्टिंग की केस स्टडीज को वो देख, सॉरी केस स्टडी कह रहा हूँ, जो मार्किंग स्क्रिप्ट्स को वो देखते हैं ना, उस मार्किंग स्क्रिप्ट की बेसिस के ऊपर दे डिसाइड कि अच्छा जी व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द आंसर्स एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द आंसर्स. So if majority kids will be drawing this, then the question will come and this will be addressed. But I've given you an idea. Explain how China's population structure changed between 1970 and 2020. I'll show you a diagram के अंदर क्या दिखा रहे हैं वो. And consider whether the statement its population is decreasing. You saw, I was telling you, this was like troubling me. The population is decreasing is supported. Please, 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 when they say something like this, whether the statement इज सपोर्टेड, दैट मीन्स तुमने आर्टिकल के अंदर जो खास चीज है उसको लेके, उस इंफॉर्मेशन को लेके, यू हैव टू सजेस्ट
Okay. So how the population structure is changed, okay, and how the population is decreasing, इसको किस तरह से आप लेंगे इस बात को। तो आर्टिकल के अंदर मुझे जो याद है वो ये है कि लास्ट 60 years की कुछ बात हो रही है। इट सेज इन लास्ट एक्सपीरियंस, ओके, सो दैट वाज द फॉलोइंग के बाद की बात। ग्राफ इज मेनली टेलिंग अस 1.1 का रेफरेंस देना था। दिस इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज फॉलोइंग, okay, population growth rate is falling, but population is still rising, okay, so that is one of the things that I think कि हमको ख्याल करना है इस बात का कि a falling grow a population growth rate does not mean that the population is also falling. All it simply means is the population is rising at a slower rate, and I will make sure that I would suggest something like this. तो मैं अपने आंसर के अंदर क्या क्या चीजें लिखूंगा। So for part B, I would suggest one of the things is that the birth rate is falling. Why? Because of the one child policy that they have suggested. उसके अलावा और क्या हुआ है 1970 based on this number? You have a higher dependency ratio. You remember what that is? More aging population, dependency ratio has gone up. ये सब article में लिखा हुआ है. I'm not making this stuff up. I'm just talking in terms of कि वहां से क्या होगा. Okay, so more of this. फिर उसके बाद, one thing for sure, that population is rising at lower rate. Okay. And even though कि वो show कर रहा है, and one of the things that I would also say is definitely the graph does not support the statement. ये तो मेरी conclusive statement है about this कि जी ये बात तो गलत है। Population कब गिरेगी? ये जब जीरो से नीचे जाएगा, और वो एस्टिमेट है, एंड दैट इज आउटसाइड माय आंसर डोमेन, तो इसकी वजह से आई विल नॉट राइट अबाउट दैट। ठीक हो गया? मेक सेंस? सो दैट्स हाउ वी आर डीलिंग विद दिस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई टू ऑब्जर्वेशंस इकोनॉमिस्ट हैव मेड अबाउट चेंजेस इन चाइना's population and analyze how these changes would affect the GDP. The connecting point is this. Everything you discuss, तो क्योंकि हमें सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन की बात करनी है, एक मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक मार्क फॉर हाउ इट वुड वर्क, एंड probably one mark for how GDP will be affected. That's a very, very important element, right? क्योंकि 6 मार्क हैं, एनालाइज है, तो मे बी यू मे वांट टू गिव अ काउंटर, बट लेट्स सी इन्होंने ऐसी कौन सी दो बातें की हैं जो इकोनॉमिस्ट हैव सीन। लेट मी गो अप। आर्टिकल के अंदर इकोनॉमिस्ट ने ऐसी क्या बात की है? पहला पैराग्राफ, पहली लाइन, सॉरी दिस पैराग्राफ, they have seen, they have observed, they can't be nicer to you more than this, right? This is a very good and easy case study, by the way. When the number of younger population falls, एक observation है, the population, the younger population is falling. Okay, what will that do? Well, the innovation and the entrepreneurship is likely to decline. Why? Why is that so? Young people are innovators, they take risks, they start new businesses, right? तो उसकी वजह से जो है it was supposed to go up, but because the number of younger population falling, we can expect this is going to happen. और फिर इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट आएगा? The effect will be the GDP will fall because less output will be produced, less investments are going to happen, so less output, less GDP, so on. एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और क्या है? What is the second thing?
एज पॉपुलेशन एजेस, ये एक दूसरा इफेक्ट हमारे पास है एजिंग पॉपुलेशन का। तो जब एजिंग पॉपुलेशन होगी, दे सेड इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स रेट आर लाइकली टू फॉल। गवर्नमेंट को जो है खर्चे करने पड़ेंगे इन लोगों के ऊपर, राइट। सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट्स दे माइट हैव टू टेक ऑन डेट, उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस होंगी। chances are that GDP is likely to fall as a result of this। कोई ऐसा कोई चीज कि इसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज कर जाए, बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव मेड एन ऑब्जर्वेशन। अभी तक तो एनालिसिस के अंदर व्हाट वी सी इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वन साइडेड थिंग। तो मार्किंग स्कीम के अंदर, लेट मी सी वेयर द मार्किंग स्कीम इज। मार्किंग स्कीम के अंदर, सी के अंदर, दिस इज व्हाट दे शोइंग, लेट मी जूम इन फॉर अ सेकंड। द नंबर ऑफ a smaller number of younger people, right? So entrepreneur, innovators, less output is likely to fall down. Okay, so that is one thing that we can observe. Give me 1 second. I'll bring back the video. Increased number of older people demand is more. All right, sorry, my apologies. I just need to change my internet. Right, so smaller number of younger population, innovators के साथ उसने connect किया है। फिर उसके बाद the second is about the how the older population is growing. You have an aging population का problem and how that might increase government's debt and transfer payments might also increase और उसकी वजह से GDP is likely to fall। ओल्डर पीपल पेंशन हो सकती हैं, उनकी इकोनॉमिक आउटपुट के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं। सो अगेन एंड अगेन देर आस्किंग कि किसी तरीके से कनेक्शन की बात की जाए। so that is what is expected out of you, that you will be able to make the connection, right? So for me, एक जो I thought कि एक सिंपल सा एक कनेक्टिंग पॉइंट हो सकता है, a declining number of younger people. As fewer people are born, the workforce shrinks, which limits the potential for innovation and entrepreneurship, and this would slow the economic growth. Remember, economic growth में खास तौर पे the potential वाला aspect ना, क्योंकि economic growth in terms of productivity. So as a smaller and less dynamic workforce would lead to a low productivity, potentially reducing the growth rate. And then same goes with the aging population with the dependency ratio and how it's going to reduce savings and investments and eventually lower GDP because most of the money is going towards the elderly. So I think कि ये एक reasonable इसका answer है. Moving on to the last part of this, so just bear with me. China's government has a different view from what it says as the alarming statement made by the economist. So that means they're countering it, the economist, sorry, the Chinese government, and consider the effects on the economy of the population policy suggested by the Chinese government. So let me go back up to the case. This is where they were sort of talking about कि हुआ क्या है। ठीक है जी, लेट्स सी। उन्होंने ये व्यू किया था, फिर जो गवर्नमेंट है उसने कुछ पॉलिसीज का सजेशन दिया है। एक, दैट रिटायरमेंट एज जो है उसको पुश फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, दैट्स वन। उसके अलावा दे नॉट रियली, आई थिंक एक ऊपर बात हुई थी कि किस तरीके से या दे विल गिव इंसेंटिव टू पेरेंट्स, राइट, कि तीसरा चाइल्ड अप टू 3 years of those kids. So they have sort of like suggested something like that.
फिर उसके अलावा दे हैव इवन लुक्ड एट के चाइना जो है दे नीड एन इंटरनेशनली competitive लेबर फोर्स। तो उनको अच्छी सी टेक्नोलॉजी अगर हम दे दें तो दैट माइट एक्चुअली वर्क ऑल्सो। तो बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिसीज यहाँ पे सजेस्ट की भी है। अम, ठीक है। तो अब इसके अंदर बात ये हो रही है कि आपका जो आंसर है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसे दिया हुआ है उन्होंने, कि जो गवर्नमेंट हैज अ डिफरेंट व्यू, और जो स्टेटमेंट है तो कंसिडर द इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी ऑफ द पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है जी। अब पॉपुलेशन पॉलिसी नंबर वन, यू हैव अ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट का प्रॉब्लम, राइट। उसको हल करने के लिए एक पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन है ऊपर, वो ये है कि बर्थ रेट को इंक्रीज किया जाए। उसके लिए उस फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए। तो उस इंसेंटिव से हमें ये लगता है, क्योंकि उन्होंने पूछा इकोनॉमी का ना, पर इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस, इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी मैंने बतानी है। तो जब बर्थ रेट गिर रहा है उसको इंक्रीज करने के लिए you're suggesting a policy of more than one child and incentive that you are, ये मेंशन करना जरूरी है पॉलिसी। तो इसकी वजह से व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इज कि एडी बढ़ेगा। यू एग्री विद दैट? मोर पीपल, more mouths to feed, more diapers, more foods, more baby food, all of that. तो उसकी वजह से प्राइस लेवल्स आर गोइंग टू राइज, इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू हैपन। नॉट ओनली दैट, बट आई वुड से एग्रीगेट सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज इवेंचुअली मोर लेबर। तो ये मैंने डिस्कशन कर लिया एक तरफ। फिर दूसरा डिस्कशन जो हम कर सकते हैं वो रिटायरमेंट एज का है। उन्होंने कहा रिटायरमेंट एज को कम कर दिया जाए। अगर आप रिटायरमेंट एज कम करते हैं तो एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि एक बड़ा ही शॉर्ट रन के अंदर एक इमीडिएट इम्पैक्ट आता है कि आपका लेबर फोर्स राइज कर जाता है, राइट। इसका भी एग्रीगेट सप्लाई पे आई सी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। दोज पीपल विल कम टू वर्क, एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज। फिर उसके अलावा दे हैव इवन टॉक्ड अबाउट कि आप अपने लेबर को, जो स्किल्ड लेबर है, उस स्किल्ड लेबर को प्लस इक्विप्ड कर दो टेक्नोलॉजी के साथ। तो उससे हमें पता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी राइज करेगी, और उस प्रोडक्टिविटी राइज करने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस लेवल्स गिरेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आई विल sort of conclude my point by exaggerating all of this stuff. ठीक है जी। I'll tell you one of the problems which I felt was there with the marking scheme. So, the points we've just discussed, I've just taken them from the marking scheme. I think because they were quite well self-explanatory. Sort of, that is one of the student is saying is that capital deepening. Sort of, you can say that आपके पास पहले तो अच्छे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन था, बट अब आप अपने लोगों को भी और फर्दर कैपिटल एंड एआई के थ्रू इक्विप्ड कर रहे हैं, sort of like giving them, like, you remember those cyborg sort of powers, right? So yeah, that is called capital deepening in a way. मुझे जो इसमें नजर आ रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ दे गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, but issue is that I'm not seeing a counter argument. When they say consider the effect, I want to talk about the positive and the negative policy. Like, what I mean is what they were aiming to achieve, and maybe they might not achieve. For some reason, यहाँ पे वो counter नहीं है. They've sort of like made an analysis over here, which I feel कि हो सकता है कि might be disputed in the marking scheme. But please remember, discuss whether के साथ consider also means that you have to sort of
bring one of the counter. तो यहां अगर तुम देखो, तुम आई sort of like suggested an answer for it कि जी, the Chinese government has suggested policies such as raising the retirement age and encouraging higher birth rate. दो को मैं लेके चलता हूं तो ओल्डर वर्कर को लॉन्गर टाइम वर्कफोर्स में रखो रिटायरमेंट एज बढ़ा के। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के लिए बड़े मसले हल हो जाएंगे। जो एजिंग पॉपुलेशन है वो काम करेगी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक बर्डन गिर जाएगा। ठीक है, पेंशन पे भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन अब ये देखो काउंटर, लेकिन ये सब शॉर्ट रन का मसला हल कर रहा है। ओके, हाउएवर this would also reduce job opportunities for younger population and potentially limit economic mobility. You understand that? कि रिटायरमेंट वाले लोग जब नौकरी के अंदर रह जाएंगे और वो रिटायर नहीं होंगे और वो काम करते रहेंगे, तो जो आपकी जो यंग पॉपुलेशन है, जो जिनको अब प्रमोशंस मिलनी थी, उनकी तरफ वी सी अ सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन टेकिंग प्लेस। इंकरेजिंग हायर बर्थ रेट, उससे क्या होगा भाई? ये एक थोड़ा सा नंबर वन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। इमीडिएट इफेक्ट तो इसका नहीं आएगा, राइट? क्योंकि टाइम लगेगा, बच्चे पैदा होंगे, 16 साल के होंगे, वर्कफोर्स में आएंगे, कैश इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म रिलीफ नजर आ रहा है 3 साल तक के लिए। लेकिन बट द ब्रॉडर कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग बर्थ रेट मे लिमिट द पॉलिसी सक्सेस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? The counter argument should be done. That's what consider mean. Look at both sides, what you were aiming for, and whether you will achieve that. मेरी नजर के अंदर this is a much better answer for this. ठीक है, मेक श्योर दैट यू डू काउंटर आर्ग्यूमेंट, और फिर आखिरी में अपना कंक्लूजन दे दो दैट द गवर्नमेंट शुड यूज बोथ द पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन। एक लॉन्ग रन सोल्यूशन के लिए वर्क करेगी, एक शॉर्ट रन के लिए सोल्यूशन के लिए वर्क करेगी, आपके मसले का हल निकल आएगा। 7 मार्कर का मैंने कोई खास ऐसे देखे नहीं है। अगेन, जो मार्किंग स्कीम में जो अभी फिलहाल जो वेटर्स हैं, उन्होंने भी ये बोला कि भाई मार्क्स किस तरह से तुम ब्रेक डाउन कर रहे हो, जरा बता दो। यूजुअली जो डी होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्कस टाइप का होता है। ठीक है, और जो इससे पिछला जो क्वेश्चन होता है, जो 4-5 मार्क का होता है, वो कंसिडर वाला होता है। यूजुअली दैट्स हाउ इट वर्क। तो मेक श्योर कि तुम अपने आंसर को जो है उसके हिसाब से एड्रेस करो। मूविंग ऑन, लेट्स गो टू आवर एसेज। एसेज को समझने की कोशिश करते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो मार्च के अंदर क्वेश्चन आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर। कहते हैं oligopolies are able to avoid price competition। एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है प्राइस कंपटीशन के नाम से। तो दैट मींस oligopolies की प्राइस कंपटीशन का एक मुझे डिस्कशन करना लाजिम है। इट्स नॉट अबाउट collusion, इट्स अबाउट प्राइस कंपटीशन। ठीक है, जब 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 oligopolies आपस में compete करती हैं प्राइसेस को लेके, ठीक है, तो फिर क्या होता है? तो लिखते हैं oligopolies are able to avoid price competition while maintaining supernormal profits in the long run। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं? oligopolies जो है वो प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है, और साथ ही में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो इंजॉय करते हैं लॉन्ग रन के अंदर। इवेल्युएट द स्टेटमेंट। इट्स अ 20 मार्क स्टेटमेंट। 20 मार्क के अंदर हमें पता है कि आंसर स्ट्रक्चर एग्जामिनर किस तरह से देखेगा। एग्जामिनर देखेगा that there is a breakdown of the essay in AO1 knowledge and understanding, AO2 analysis। Okay, you're going to get marks in level 0, level 1, level 2, level 3। level 0 is obviously तुम्हारा कोई सीन नहीं है। level 1 is somewhere between 1 to 5, level 2 is between 6 to 10, and level 3 is 11
to 14. Your aim should be to qualify your answer for a level 3. Okay, I'll tell you what qualifies it. फिर इसके अंदर जो 6 मार्क की इवेल्युएशन है, दैट इज कॉल्ड AO3, which is the counter argument. Okay, तो इसके अंदर हमारे पास अगेन लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2. लेवल 0 इज इवेल्युएशन के कोई मार्क्स नहीं मिलते. लेवल 1 you get 1 to 3, and then this is 4 to 6. ठीक हो गया. दिस इज हाउ द ब्रेकडाउन इज फॉर दी. अब आंसर में हमने करना क्या है? Obviously, some terminologies you want to explain. I don't know why I did not highlight that. I should be highlighting this with like the red color. Most important. Oligopolies होती क्या है? क्या होती हैं oligopolies? Give us some features about them. Give us maximum features about them. Let me give you level 1 up to 3 marks for this. Okay? Oligopolies की जो खास बात तुमने करनी है, that is about the few dominant firms, about them being interdependent on each other. अब तुमने बात करनी है मार्केट शेयर की, कंसंट्रेशन रेशियो की. डू दैट. टाइप्स ऑफ गुड्स, होमोजेनस, डिफरेंशिएटेड. डू दैट. नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. फिर प्राइस कंपटीशन. वी वांट टू टॉक अबाउट प्राइस कंपटीशन. जब फर्म ओलिगोपोलीज के अंदर जब प्राइस कंपटीशन करती हैं, तो वीव कम अक्रॉस 2 मॉडल्स इन इट. एक हमारा किंक्ड डिमांड कर्व का मॉडल, कि किस तरह से प्राइस बढ़ाओगे तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा, और प्राइस बढ़ाओगे तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा, और प्राइस गिराओगे तो सब फॉलो करेंगे. विच ब्रिंग्स अस टू द रिजिडिटी, सॉरी दैट स्पेलिंग, which talks about the rigidity of price. Okay. Also, price कंपटीशन के अंदर हम हमेशा गेम थ्योरी की बात कर सकते हैं. यू रिमेंबर collusion versus compete. I'm talking about compete. When you compete, what happens? तो गेम थ्योरी के अंदर भी आपको पता है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द Nash equilibrium, that they will choose a situation where even if they change the price, they're not going to benefit out of that. तो एक ये बात हो गई है. ठीक है. फिर I would like to talk about what is this supernormal profit. ठीक है. So you're going to talk about the supernormal profit. Supernormal profits के अंदर we want to talk about that how the profits that are made is more than their explicit and implicit cost. It's more than their opportunity cost, right? So that's however you want to explain it, please do that. एक तो हम समझाते हैं that when the average revenue is greater than average cost, and basically the idea is that your revenue is actually greater than your total cost, जिसके अंदर आपकी explicit and implicit cost दोनों आ जाती हैं. ठीक है. आई डोंट नो ये इसके ऊपर कितने मार्क्स इस पे होंगे नहीं होंगे, बट दिस इज सम वैल्यू एडिशन स्टफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन आवर एसेज. Now, I'm sure that many of you are thinking, why don't we write about the cartelling? Why don't we talk about the collusion, right? So, लेकिन question को समझो. What they're saying is, oligopolies are able to avoid price competition. ठीक है? While maintaining. So, they're not going for price competition, right? They're avoiding the price competition, and they are
still making abnormal profits. अब जब ये वाला हिस्सा तुम्हारा हो गया कि तुमने प्राइस कंपटीशन को भी समझा दिया, तुमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को भी समझा दिया, तुमने ओलिगोपोलीज को भी समझा दिया, अभी तक मैं अभी तक मैं अपने AO1 और AO2 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नाउ यू कैन टॉक अबाउट what is coming in your mind, which is the collusion के model, which is about the cartel. Okay. And you can talk about other stuff like the tacit collusion, जिसके अंदर आप price leadership model. But please, the only thing I want to tell you right now is that even if you're explaining these theories, please connect it to your answer above. बार बार उसको लेकर आओ. For example, if you're saying कि cartels जो है, they avoid price competition and they might go for cartelling, in which the major dominant firms, they decide on the price and they decide on who's going to produce how much, and they continue to make abnormal profit. ठीक है. या अगर वो टैसिट कोलूजन करते हैं, प्राइस लीडरशिप मॉडल होता है, तो उसमें भी हमने यही देखा है कि वो प्राइस को अवॉइड करते हैं. किस तरीके से? बाय allowing the leader to choose the major market price, and then the rest of them just quietly follow, and they only compete through advertisement. जो आपकी वो दूसरे तरीके हैं ना, एडवर्टाइजिंग करते हो, प्रमोशंस करते हो, मार्केटिंग करते हो, उसके थ्रू यू माइट बी competing, बट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर नॉट competing. Alright. So once you do all of that, then you qualify for a level 3 answer. जितना डिटेल के अंदर लिखोगे, तो दिस इज हाउ आई विल, जब मैं तुम्हारे ये ऐसे चेक करूंगा ना, तो दिस इज हाउ आई ब्रेक डाउन माय लेवल्स का थॉट. ओके, हियर मी आउट. बेसिक definition of oligopoly and a good in-depth analysis, knowledge and understanding of what these things really mean. Level 1, below 5. Okay. You do price competition, एंड अगर ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को भी समझा दो, तो यहां पे मैं तुमको पूरे 5 मार्क दे दूंगा. फिर प्राइस कंपटीशन के बारे में लिखने के लिए मैं तुमको लेवल 2 पे कंसिडरेशन दूंगा. ठीक है, कि प्राइस कंपटीशन क्या होती है और उसमें क्या होता है. टर्न्स आउट कि उसमें भी प्राइस स्टेबल हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट. फिर उसके बाद जब तुम ये लिखोगे, तो मैं तुमको लेवल 3 पे कंसिडरेशन दूंगा. ठीक है, कि किस तरह से वो अवॉइड करते हैं while maintaining the abnormal profit. So this is how the answer should sort of flow. I have sort of like again एक आंसर मेरी नजर के अंदर, I've proofread it and I feel कि ये एक reasonable सा ऐसे है. some reason थोड़ा सा साइड के ऊपर कट रहा है, so let me see if I can. Right, let me see if I can sum it up a little. So follow how this goes. और this is like in student writing, right? Student किस तरह से लिख सकते हैं इसको from the bookish way. So an oligopoly is a market structure where a few large dominant firms in the industry. These firms are interdependent on each other. That means one decision will have an effect on the others. Interdependence होने की वजह से price stability promote होती है market के अंदर. ठीक हो गया. इसके अंदर तुम और फीचर्स लेकर आना चाहते हो, लेकर आ जाओ. मेरे लिए ये और ये टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन मस्ट है. तुम बहुत सारी और भी चीजें लिख लो, ये दो वर्ड्स नहीं लिखोगे, आई विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट. वन एक्सप्लेनेशन फॉर द लैक ऑफ प्राइस कंपटीशन इज कि आप प्राइस कंपटीशन करने भी जाओगे, किंग डिमांड कर्व क्या बताता है कि अगर आप करने भी जाओगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ाओगे, others will not follow, you're going to lose market shares, so you will not do it. If you reduce the prices, competition will follow, you're not going to gain much market, कोई फायदा नहीं हुआ, तो प्राइसेस वहीं रहने दें. लेट्स अवॉइड. देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है, वेयर फर्म्स अवॉइड चेंजिंग प्राइसेस एंड इंस्टेड फोकस ऑन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी.
इसको फिर क्वेश्चन के साथ वैसे तो मैं खाली कनेक्ट कर देना चाहिए। दिस अलाउज देम टू मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन इसमें नहीं लिखी है, मेरी नजर में होनी चाहिए, मार्किंग स्कीम में भी मिसिंग है। फिर उसके बाद गेम थ्योरी की बात करते हैं। देखो छोटी छोटी सी बातें हैं। Firms in an oligopoly may also use game theory to decide on their pricing strategy. In a Nash equilibrium, no firm has an incentive to change its strategy as long as the other firm is keeping it unchanged. ठीक है? Again, ये क्या कह रहा है? This can result in stable prices over time, even without formal collusion. I think there is a little explanation needed over here. हमने गेम थ्योरी में क्या पढ़ा है कि there is always incentive to cheat. If I cheat, I will be better off. If the other one also cheats, at least I'm not worse off. That was the idea. But here, the key thing is that over time, people will realize this, and then they're going to make, they're going to understand that, you know what, हम दोनों का नुकसान ही है. Pepsi and Coke over the years have understood in Ramadan that certain things work and certain don't. So let's avoid doing a price war or something like that. It doesn't work in our favor, right? So there is sort of like an understanding that builds up. फिर उसके अंदर oligopoly firms often earn supernormal profits in the long run, mainly because of high barriers to entry. How can we miss out on that? In fact, ये तो one of the जब हम ऊपर लिखते हैं ना फीचर्स, उसके अंदर ये फीचर होना चाहिए था कि वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री। और फिर नीचे उसका एनालिसिस हो सकता है कि ब्रांड लॉयल्टी एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फर्म जो है कंपटीशन को नहीं आने देगी, एंड दे कंटिन्यू टू मेक प्रॉफिट। फिर कार्टेलिंग की बात हुई हुई है, तो प्लीज इसको एक्सप्लेन करो अपनी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। I'm just going to skim down, which you can later on pause and see what it says. तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. In addition to avoiding price competition, oligopoly firms often use uh, non-price competition such as advertising and all of that. So do you see, technically what we've done is we've pretty much everything that we've learned in oligopoly, we've spoken about it. You see that every single model. Try to do at least 3, 4 of these for maximum mark. ठीक है? जितना कवर कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है? फिर 6 मार्क की इवैल्यूएशन है, तो प्लीज इवैल्यूएशन को डोंट टेक इट लाइटली। इवैल्यूएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जब भी तुम इवैल्यूएशन लिखने जाते हो ना, मेरा ख्याल ये है दैट यू शुड ऑलवेज राइट इन इवैल्यूएशन एंड देन कंटिन्यू। ठीक है? So in evaluation, collusion can help maintain high profits. It is illegal in many countries and difficult to sustain in the long run. You see, long run, because the question is talking about long run, I need to you remove this, and your answer becomes less appealing. Your evaluation becomes less appealing. Okay? Firms may cheat on agreements, जिससे मार्केट शेयर में जो फायदा होना था वो नहीं होगा। प्राइस वॉर हो सकती है, प्रॉफिट कैन बी लोअर। अब देखा, काउंटर आर्ग्यू कर रहे हैं कि आपने क्वेश्चन में बोला था कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में भी मेंटेन कर सकते हैं, मैं उसको काउंटर कर रहा हूं इधर कि नहीं मेंटेन कर सकते। बैरियर्स लगाते हो, लेट्स सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं, बैरियर्स नहीं लगाने देते वो आपको, लाइक एंड डीरेगुलेशन, एंटी ट्रस्ट लॉज, फैंटास्टिक वन। फिर उसके बाद यूज ऑफ लिमिट प्राइसिंग, यू नो व्हाट दैट इज लिमिट प्राइसिंग? लिमिट प्राइसिंग इज, ये आ चुका है बाय द वे, आई थिंक इन वन ऑफ द केस स्टडीज आ चुका है। लिमिट प्राइसिंग एंड प्रेडेटरी प्राइसिंग में फर्क क्या होता है? लिमिट प्राइसिंग क्या होती है? व्हेन यू लोअर योर प्राइसेस टू सच एन एक्सटेंट that you might be making a little bit of abnormal profit. You might be making normal profit, but you lower your prices down so close to your average cost that anyone who wants to enter the market is cautioned that, you know what, if we enter and the price goes down, nobody makes profit, let's not go into the market, right? So हम limit pricing को ऐसे explain करते हैं that limit pricing is that level of pricing where you discourage competition from entering the market. ठीक हो गया?
तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि यूज ऑफ लिमिट प्राइसिंग की वजह से आपके जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वगैरह हर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यू माइट नॉट बी एबल टू इनोवेट। और आपकी डायनामिक एफिशिएंसी, यू सी दिस डायनामिक एफिशिएंसी, मैं बता रहा हूँ माइक्रो के क्वेश्चंस के अंदर डायनामिक एफिशिएंसी का यूज लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव के लिए हर किस्म के क्वेश्चन के अंदर घुसा रहे हैं। वो वेदर लेबर का हो, एक्सटर्नैलिटीज का हो, मार्केट स्ट्रक्चर्स का हो, they are talking about the dynamic efficiency, which has a long run implication. Once you talk about these counter arguments, they can see, then we come to, in conclusion, while oligopolies can avoid price competition and sustain normal profits under certain conditions, such as high barriers and successful non-price competition, there are multiple challenges and limitations like legal restrictions and so on and so forth, and it affects their undermines their ability in the long run. क्या ही जबरदस्त conclusion है. In evaluation, in conclusion, get yourself good marks and attempt a question like this. लेकिन whenever you do the answer, ask yourself, have I really answered the question? So what was the question? Oligopolies are able to avoid competition. They are able to avoid competition through the tricks that we mentioned and make abnormal profits in the long run. Lekin sometimes they're not able to maintain it in the long run because they might not work. You understand? ये तुम्हारा ऐसे है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है. दिस इज हाउ इट गोज अबाउट. कोई फैंसी जार्गन्स वगैरह की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट टू द पॉइंट लगाओ. लेवल 3 के लिए जाओ. मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, क्वालिफाई फॉर अ लेवल 3, रीजनेबल डिटेल एंड एक्सेल. अंडरस्टूड? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. ना दिस इज अगेन वन ऑफ दोज क्वेश्चन. मेरा ख्याल में तो इस साल फिर लेबर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है. गौर से देखो, ख्याल करो इसके लिए. क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिकीनेस है. With the help of a diagram, I'll make the diagram. With the help of a diagram, evaluate the consequence of imposing an effective minimum wage on the employment level and wage level in a monopsony labor market. Same concept, okay? So I know we're going a little too much in detail. The class will go on till we finish the paper. I need to finish this paper. चलें जी, देखते हैं. So with the help of the diagram, देखें जी, दो तीन diagram हैं. Obviously, one of the major one, let's explain the terminologies which I would like to see. The diagrams, I will tell which diagrams I would like to see. एक तो let's talk about what is an effective minimum wage. ओके, मिनिमम वेज यूजली अबव इक्विलिब्रियम लगता है. मैं तो डिमांड सप्लाई का डायग्राम नहीं होता हमारा, उसके थ्रू इस बात को समझाने की भी कोशिश करूंगा. आई वांट टू पुट इन एज मेनी डायग्राम्स एज आई कैन बिकॉज इट सपोर्ट्स माय एक्सप्लेनेशन ना. डिमांड एंड सप्लाई बनेगा हमारा. इलास्टिसिटीज को मैं इग्नोर करूंगा. आई विल टॉक अबाउट इलास्टिसिटीज फॉर माय डिस्कशन एंड you'll see that how I'm going to factor that in. तो बेसिकली होता क्या है, एक परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में दिस इज वेयर द लेबर वुड बी हायर्ड. ठीक है, और जो एक इफेक्टिव मिनिमम वेज होती है दैट इज अबव द इक्विलिब्रियम, right? So that's how the national minimum wage is applied. And what it does is, usually what it does is, it is supposed to reduce employment, right? It is supposed to create a surplus which creates unemployment. So usually this is what we know of it in our normal theory. But they're not talking about this. They're talking about how it will have an effect on the monopsony. So I want to explain what a monopsony labor market is. I'll give you the definitions in a bit. But the diagram that I'm looking for over here is the level का diagram बनता है इसका. Please make sure that you perfect yourself with monopsony का diagram. Basically, what happens in a monopsony का diagram is
you have the quantity of labor, you have the wage rate. आपको पता है एमआरपी थ्योरी, राइट? उसकी बेसिस पे जो डिमांड कर्व निकलता है, एमआरपी फॉर लेबर, राइट? ये दिस इज द सेम थिंग एज द डिमांड फॉर लेबर। फिर आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनता है इस तरीके से। दिस एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज कि आपको लेबर मार्केट में किस वेज रेट के ऊपर मिल जाएगा। एंड देन वी नो कि मार्जिनल कॉस्ट इज अबव ऑन द अबव साइड, राइट? ये मार्जिनल कॉस्ट है ऑफ द लेबर। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर मोनोप्सनी क्या करता है? मोनोप्सनी टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस होल सिनेरियो, और मोनोप्सनी क्यू एम की हायरिंग करता है, और वेज जो है वो डब्ल्यू एम पे करता है। मैं एक दफा इसको बहुत क्विकली, पता है क्या करूंगा? मैं इसको परफेक्ट मार्केट्स के साथ कंपेयर कर लूंगा, जस्ट फॉर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी मुझे, बट दैट्स व्हाट आई वुड डू। बिकॉज व्हाट इट डज इज दैट एक कंपैरिजन बेंचमार्क दे देता है कि देखो जी, मोनोप्सनी क्या करता है कि परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से लोअर वेज ऑफर करता है, और हायरिंग भी कम करता है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है, राइट? तो ये मेरा मोनोप्सनी का डायग्राम हो जाता है। असल तो मेरा जो डिस्कशन है वो ये है कि जब मैं इस डायग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस करता हूं नेशनल मिनिमम वेज, तो उससे क्या होता है? तो हम ये बात करते हैं कि अगर आप नेशनल मिनिमम वेज लगाते हैं, लेट्स से डब्ल्यू एम से मैंने ऊपर लगा ली, मैंने यहां लगा ली नेशनल मिनिमम वेज, ठीक है? क्योंकि नेशनल मिनिमम वेज का क्या मतलब है कि मैं इससे कम तो नहीं पे कर सकता ना। तो माय न्यू सप्लाई कर्व देन बिकम्स दिस रेड लाइन दैट आई मेड, that the wage rate cannot fall below this level. All right, national minimum wage, your labels are a must. You make a diagram. As an examiner, I'm telling you, you make your diagram and it's not correct. It just upsets me. And when it makes me upset, it doesn't make me feel good. And I don't want to give you good marks for it. All right. And I will hold it against you. So, लेबल्स अच्छे होने चाहिए। नेशनल मिनिमम वेज लगाया, और उसने पूछा कि जब आप नेशनल मिनिमम वेज लगाते हैं तो बताएं जी, व्हाट विल हैपन टू द वेज रेट ऑफ मोनोप्सनी के, एंड व्हाट विल हैपन टू द एम्प्लॉयमेंट। तो मैं प्रूव करूंगा यहाँ पे कि देखिए, नेशनल मिनिमम वेज लगाने से वेज रेट्स हैव गॉन अप, मोनोप्सनी से तो एटलीस्ट ऊपर चला गया है। और जो हायरिंग हो रही है, रिमेंबर हायरिंग अब यहां तक होगी, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक हायरिंग होगी, ठीक है? तो मिनिमम वेज की बेसिस पे, ना दिस इज वेयर द हायरिंग इज, तो एम्प्लॉयमेंट हैज आल्सो इंक्रीज्ड। इफ यू वर टू आस्क मी ये क्यों हुआ है, व्हाई हैज द हायरिंग इंक्रीज्ड टिल हियर, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि देखें जी, पहले मिनिमम वेज पे यहां से लेके यहां तक वेज जो है वो स्टेबल रहेगी, बिकॉज वर्कर्स विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन दिस। तो दिस पार्ट ऑफ माय सप्लाई कर्व इज यूजलेस नाउ। लेकिन इस पॉइंट के बाद वर्कर वांट्स टू गेट पेड मोर, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट द मिनिमम वेज, राइट? तो ये आपका सप्लाई कर्व हो जाता है। जब ये सप्लाई कर्व होता है, तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो ये होता है कि पहले फ्लैट आउट, देन इट गोज अप लाइक दिस, एंड देन इट कंटिन्यूज लाइक दिस। If you don't know this, he's going to the lectures, and that's where you're going to see more of this, कि ये कैसे हुआ था। But the idea कि एक profit maximizing firm MRP equals to MC की basis पे hiring करता है, तो MRP ये रहा, MC की line ये रही purple, तो black and purple meets over here, so hiring will happen till here, and we proved our point that if national minimum wage लगेगी मोनोप्सनी के केस के अंदर, तो वेज रेट इज गोइंग टू गो अप एंड हायरिंग इज गोइंग टू इंक्रीज। ये कब तक होगा? ये कब तक होगा? ये उस वक्त तक होगा जब तक गवर्नमेंट का नेशनल मिनिमम वेज इंक्रीज होके परफेक्ट कंपेटिटिव लेवल्स तक नहीं आ जाता। यहां तक होगा, क्योंकि इससे ऊपर मिनिमम वेज लेके चले गए तो एम्प्लॉयमेंट गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन एटलीस्ट मोनोप्सनी के नंबर से तो फिर भी हायरिंग ऊपर होगी। तो अप अंटिल दिस पॉइंट राइट हियर,
national minimum wage has an ability to go up to W1. तो hiring will be the same as monopsony. ओके, आई होप तुमको समझ आ रही है ये सारी मेरी बात। ये मैंने पूरी एक्सप्लेन की हुई है अपने लेक्चर्स के अंदर कि W1 तक मिनिमम वेज अगर चला जाए, तो लेट मी डू द मोस्ट एक्सट्रीम वाला, ये वाला ना। इसके अंदर मैं कहता हूं कि वेज रेट हैज द एबिलिटी टू गो अप टू टिल हियर। सपोज करो कि गवर्नमेंट नेशनल मिनिमम वेज लगा देती है यहां तक, इससे नीचे वेज रेट एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये आपका एग्रीगेट, ये हो गया नया सप्लाई कर। अब एमआरपी इक्वल्स टू एमसी, एमआरपी की लाइन एमसी की लाइन इंटरसेक्ट ओवर हियर, गवर्नमेंट का जो नेशनल मिनिमम वेज है वो यहां पे लगा हुआ है। एमआरपी इक्वल्स टू एमसी, हायरिंग इज स्टिल हियर, लेकिन द वेज रेट हैज गॉन अप। इससे अगर मैं ऊपर ले जाऊं, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम विल कम इन। इससे अगर मैं ऊपर ले जाऊं इसको, तो अब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि अब क्या होगा, एमआरपी इक्वल्स टू एमसी अब इधर हो जाएगा, एमआरपी एमआरपी एमसी, और अब आप मोनोप्सिनी से नीचे चले जाएंगे। आई थिंक आई एम गोइंग इनटू माय इवैल्यूएटिव डिस्कशन, लेकिन अभी जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो, दैट इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ the government and the size, not power, but the size of national minimum wage. So let me go over a proposed essay, लेकिन पहले एक मार्किंग स्कीम दिखा देता हूं। दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वांट। मोनोप्सनी लेबर मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक, ओके, वन सिंगल फर्म, डायग्राम, लो वेज, लो एम्प्लॉयमेंट। नेशनल मिनिमम वेज क्या होता है, डायग्राम, व्हाट इट इज, व्हाट इट डज, ओके, डायग्राम के थ्रू an accurately, clearly labeled diagram showing the effect of introduction on national minimum wage on a monopsony, the lower diagram that I did, the impact of the increase of national minimum wage on both the supply of and the demand for the labor in a monopsony market should be analyzed. अगर आप मिनिमम वेज को इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, विच वी डिड ओवर हियर, तो दैट वुड कम इन हैंडी फॉर यू। ये वाला जो हमने डायग्राम किया था अभी जस्ट ऑन द लेफ्ट, जिसमें हमने नेशनल मिनिमम वेज को अप्स एंड डाउन्स किए थे। फिर एनालिसिस शुड बी used to determine the potential impact on the level of employment and the new equilibrium wage rate। वो इधर ही हो जाएगा कि एंड रिजल्ट क्या है, कि आपकी वेज रेट को क्या होगा और लेबर की एम्प्लॉयमेंट को क्या होगा, राइट। सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। And the analysis should then recognize that the impact on wages and employment will be different depending on the relative velocity। इसका क्या मतलब, यही एमआरपी कर्व को मैं स्टीप कर दूं या फ्लैट कर दूं, उससे क्या होगा, उससे बहुत मेजर मेरी एम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट के ऊपर डिसीजन मेकिंग और उस पर इम्पैक्ट आएगा, ओके। या सप्लाई कर्व को मैं ज्यादा इलास्टिक कर दूं, तो उससे क्या होगा कि कितना ये जो इंक्रीज मैंने दिखाया ना, कि कितने से ये इंक्रीज आया और कितने से ये इम्पैक्ट आया, you don't need to make the diagram for it, you can just talk about it। The more elastic it is, the more it's going to have an impact on the employment levels, simple as that। A small change in minimum wage will have a major impact on the employment level in the economy। फिर आपने इसको काउंटर करना है। काउंटर में बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि अगर इनइलास्टिक होगा तो इट में नॉट हैव मच इफेक्ट, कितने से इंक्रीज कर रहे हो नेशनल मिनिमम वेज, दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट। अगर एमआरपी राइट पे चला जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उससे क्या होगा। So there are all sorts of these things which are mentioned। So I have an essay over here which I'll just scroll through just for record keeping। You know what, this is what we have discussed। इसके अंदर सबसे पहले मोनोपोली मार्केट को एक्सप्लेन किया है, सिंगल डोमिनेंट एम्प्लॉयर है, ठीक है, सिंगल बायर है, पावर आ जाती है उनके पास वेज सेटिंग की, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। वेज सेटिंग की बात आ जाती है। डायग्राम के थ्रू मैं प्रूफ करूंगा कि किस तरह से वो लो वेज ऑफर करते हैं, कम बंदा हायर करते हैं।
द सप्लाई ऑफ लेबर, मार्जिनल कॉस्ट, एमआरपी, वो सब डायग्राम के मैंने एक एक डायग्राम को समझाना है, उसके अंदर लाइनों को समझाना है। फिर मिनिमम वेज को समझाना है वो क्यों लगती है। फिर मैंने अपने डायग्राम के अंदर उसको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम कौन सा वाला है, ये जो मैंने लेफ्ट पे बनाया है। फिर उसके बाद मिनिमम वेज की चेंजेस को मैंने दिखाना है कि किस तरीके से दैट विल हैव एन इम्पैक्ट, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद अगर इलास्टिक इन इलास्टिक हो तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, आई सॉर्ट ऑफ लाइक गिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। फिर इवैल्यूएशन के अंदर आई टॉक्ड अबाउट लाइक द साइज ऑफ द मिनिमम वेज एंड ऑल ऑफ दैट, मिनिमम वेज कितने से चेंज हो रही है एंड इलास्टिसिटी, काउंटर आर्ग्यूमेंट, फिर प्रोडक्टिव गेन्स की बात की है, स्मॉल बिजनेसेस कैसे इम्पैक्ट होंगे, एंड उसके अलावा कैपिटल सब्स्टिट्यूशन, फॉर सम रीजन इट्स नॉट शोइंग ओवर हियर, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग ओवर हियर, बट एक सेकंड, या नाउ इट शोज कैपिटल सब्स्टिट्यूशन अगर हो जाए तो उसकी वजह से मिनिमम वेज क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा इम्पैक्ट। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि वेज रेट, नेशनल मिनिमम वेज बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगी एक मोनोपोली की। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कैपिटल सब्स्टिट्यूशन की तरफ चला जाए, दे डोंट वांट टू हायर मोर लेबर, दे डिसाइड मशीन रिप्लेस करो इनको, तो एम्प्लॉयमेंट विल नॉट रियली इंक्रीज। ठीक, so points like this has been discussed, and then your final evaluative statement has been discussed over here. ठीक हो गया? So that concludes our micro, and this is how you are expected to answer. फिर उसके बाद आते हैं मैक्रो साइड। ऑनेस्टली मैक्रो के क्वेश्चन बहुत आसान है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बहुत आ रहे हैं, लास्ट 50 पेजेस बहुत अच्छे से पढ़ो इन द वर्कबुक। आई डोंट नो इफ इट्स 50 पेजेस और 60 पेजेस, but it starts with government macroeconomic policies. With the help of a diagram, assess karo the effectiveness of government policies that might be used to reduce demand pull inflation. Question की theme है, understood? बताया कोई पॉलिसी बताइए, नहीं बताई हुई, ओपन एंडेड है, so we can talk about as many policies as we want. I think 2 to 3 policies well explained होनी चाहिए, 3 कर लो। एंड मेजर आइडिया इज रिड्यूस डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझा देना चाहिए हमको कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती क्या है। ठीक है। फिर कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्वियसली आई एम श्योर यूर थिंकिंग कॉन्ट्रैक्शनरी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी आपके पास आ जाती है। फिर आपके पास डीवैल्यूएशन की पॉलिसी आ जाती है, आपके पास सप्लाई साइड पॉलिसी आ जाती है, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन की implications आ जाती हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट। काफी हद तक तो ये ऐसे ऑलमोस्ट तुमको ऐसा लगेगा लिखते हुए कि तुम एएस का आंसर लिख रहे हो, राइट? तो इट्स फाइन, एएस की लेवल का लिखो। लेवल 3 का आंसर लिखने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज यू वांट टू मेक श्योर you talk about demand pull for inflation, what it is. You talk about the policies which will help you reduce it. You counter the policies that how it will not help you reduce demand pull inflation. Okay? Then you come towards the effectiveness. You talk about the short and long run implications of it, right? And you talk about whether you have the capacity utilization or not. Yeah, the capacity almost LRAS almost like hitting the peaking side wala, the vertical side wala. So that sort of a thing, supply bottleneck. There's plenty of things. In fact, मेरे ख्याल में तो मार्शल लर्नर्स कंडीशन, हाँ, आई डोंट थिंक दे गोना डू, लेकिन डालने में तो मैं डाल सकता हूँ किस तरह से। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूएशन अफेक्ट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, व्हिच अफेक्ट एडी। एडी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्शल लर्नर्स कंडीशन। मार्शल लर्नर्स कंडीशन इज अगेन लास्ट 60 पेजेस का एक इंपॉर्टेंट बिट। तो यू नो गो अबाउट दैट वे। So what I have proposed is an essay for that. क्या लिखेंगे? पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन is a rise in the general price level due to increase in aggregate demand in the economy, which is near or full potential. दोनों तरफ हो सकती है। बनाना चाहो तो वो LRAS वाला डायग्राम बना के प्रूफ कर दो। It occurs when household firms and government spending, CIG, right?
but the supply side of the economy cannot match this. ये बड़ा important statement है by the way. Demand pull inflation को जब भी explain करो ना तो you say the increase in AD is more than the rise in AS. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे guaranteed हो जाएगी. I've seen this in AS also. So the result is the price is pulled upwards. Diagram बनाओ, कोई टेंशन नहीं है. कॉमन कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस राइज हो गया जिसकी वजह से हो गया, लोअर इंटरेस्ट रेट जिसकी वजह से हो गया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जिसकी वजह से हो गया. डोंट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स, जस्ट सजेस्ट अ कपल ऑफ देम. ठीक है, ताकि तुम्हारा वो पक्का हो जाए. फिर एडीएस का डायग्राम बनाओगे. एडीएस का कौन सा वाला डायग्राम बना सकते हैं, इट्स अप टू यू व्हिच वन यू वांट टू मेक. हमारी तो ज्यादातर प्रेफरेंस होती है एलआरएएस वाला बनाओ इस तरीके से. रियल आउटपुट लिखोगे, पूरा रियल आउटपुट लिखोगे, प्राइस लेवल लिखोगे, पूरा लिखोगे. फिर यू कैन हैव अ डिस्कशन. मैं तो नीचे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर आप बिलो एम्प्लॉयमेंट हो और AD1 से AD2 के ऊपर आपका शिफ्ट होता है डिमांड पुल के लिए, तो मे बी थोड़ी सी इन्फ्लेशन हो जाए. राइट, बाय 1 से थोड़ा सा बढ़ गया P1 से P2 के ऊपर, तो थोड़ा सा इसको और इनफैक्ट राइट पे कर दो ताकि वो इलास्टिक रेंज से बाहर चला जाए. तो इस तरह का डायग्राम बना के यू कैन शो एंड यू कैन टॉक अबाउट दैट. फिर पॉलिसी किस तरह से करेक्ट करनी है. ओके, बाय द वे डोंट स्पेंड टू मच टाइम ओवर हियर. दिस विल मैक्सिमम गिव यू level 1 5 marks because that's what you're explaining. अभी आपने जल्दी से जाना है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ. Contractionary fiscal के अंदर you're going to suggest what is going to cause that, increasing direct taxes. You explain that how will that will affect government spending कम करो. You explain how that will have an impact on पूरी injections और ये ऐसे terminologies use करके AD curve shift to the left diagram बना के मैं show कर सकता हूँ कि देखें जी diagram में जब AD left पे जाएगा तो this will have an impact. However, this depends on the marginal propensity to consume. अगर इकोनॉमी के अंदर डिस्पाइट हायर टैक्सेस पीपल कंटिन्यू टू स्पेंड, ये मैं काउंटर आर्ग्यू कर रहा हूँ, इवन इफ पीपल कंटिन्यू टू स्पेंड मे बी डिमांड माइट नॉट फॉल एंड सो इन्फ्लेशन डज नॉट कम अंडर कंट्रोल. ये देखो ये पॉइंट किससे लिंक्ड है, ये पॉइंट लिंक्ड है डिमांड पुल के साथ. व्हाट हैपेंस यूजुअली इज बच्चे फिस्कल पॉलिसी की मुझे लिमिटेशंस देना शुरू कर देते हैं. फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन क्या है, इट टेक्स टाइम टू हैव एन इफेक्ट. गवर्नमेंट टाइम लैग है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम, पॉलिसी बनाती है, पार्लियामेंट के अंदर उसको पास कराती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसका इफेक्ट आता है, बहुत देर लग जाती है. राइट, तो देर इज अ चांस कि भाई ये सारी सिचुएशन के अंदर वक्त लग जाए बहुत ज्यादा. ओके, फिस्कल पॉलिसी के और क्या मसले हैं. फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है कुछ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो सकती है जो कि कट डाउन नहीं हो सकती. गवर्नमेंट ने कमिट किए हुए हैं, जैसे आपके पास आर्मी के अंदर है, गवर्नमेंट हैज कमिटेड, कुछ भी नहीं कर सकते. लेकिन इन पॉलिसीज का डिमांड पुल से क्या ताल्लुक है और हाउ इज इट लिमिटिंग इट. राइट, सो यू नीड टू कम अप विद वेज जिसके अंदर यही जो पॉलिसी तुमने डिस्कस की है उसको डिमांड के साथ लिंक करो कि AD को गिरने नहीं देगा. सो यू कम अप विद रीजंस व्हिच विल से कि ठीक है जी, contractionary fiscal policy has a limitation, ठीक है, but that will not let a demand pull inflation come down. ओके, जेनेरिक मत देना. ऑल्दो मेरे ख्याल में तो शायद काउंट भी हो जाए, बट देख लो जी मार्किंग सी में, दे नॉट टॉकिंग अबाउट द जेनेरिक वन. फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी की बात की है, कैसे सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और मनी सप्लाई को कम करेगा, उससे AD रिड्यूस होगा एंड थिंग्स विल गेट बेटर. फिर ये भी हो सकता है कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाए बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट. उससे क्या होगा, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फर्क आएगा, उससे भी AD गिरेगा. वेरी गुड, इन्फ्लेशन कम्स अंडर कंट्रोल. बट मे बी इट माइट नॉट. वाई, हो सकता है, यहाँ पे मैं वो मार्शल लर्नर्स की बात कर रहा था कि दिस विल ओनली वर्क इन द केस कि अगर आपका इलास्टिक होगा, सॉरी इन इलास्टिक होगा, तो जब आपकी डेप्रिसिएशन होगी तो AD, जब आपका AD गिरेगा बिकॉज ऑफ, अगर ये लेट मी थिंक, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से, इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप इन इलास्टिक, या तो मार्शल अर्नर्स कंडीशन से कि अगर PD फॉर एक्सपोर्ट प्लस PED फॉर इंपोर्ट दोनों को कंबाइन करो और ये
ग्रेटर देन वन होगा तो उससे क्या होगा, अप्रिसिएशन से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट विल राइज, ज्यादा से गिरेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इफ दिस इज योर मास्टर लर्नर्स कंडीशन, तो इन दैट केस योर एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू फॉल डाउन एंड इट विल कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक। अदर पॉलिसी टूल्स की भी बात कर रहे हैं, वो एक्सचेंज रेट पॉलिसी की मैंने फिर कोई राइटअप दिया हुआ है कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी इफेक्ट हो सकती है। You can take a look at that also, and then you come towards your final evaluation कि उसकी effectiveness, will it be able to have an impact? Direct taxation may reduce incentive to work and invest, potentially leading to lower long-run economic growth. If the tax burden disproportionately affects lower income group, that it is going to worsen the income inequality. डिमांड के साथ कुछ खास इसमें लिंक नहीं दे रहे हैं ये लोग, but whatever you do account conflicting, obviously conflicting will work कि किस तरीके से हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है आपकी लोकल इकोनॉमी कैन एक्चुअली गेट वर्स, आपका लॉन्ग रन इफेक्ट कैन बी वर्स बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कर रहे हो, राइट। फिर एक मास्टर लर्नर्स का डिस्कशन है, दैट हैज बीन मेंशन्ड आल्सो, सिंपल इलास्टिसिटी की बात हुई भी है, राइट। फिर टाइम लैग की बात हुई भी है। सो वी हैव ऑल दीज पॉइंट्स दैट वी वांट टू टॉक अबाउट आल्सो फॉर द इफेक्टिवनेस के वेदर it will help us reduce the aggregate demand or not. With our final conclusion, a nice conclusion is definitely going to help. So our nice conclusion would be uh, in the short run, contractionary monetary policy. By the way, you know that it's a demand side policy. The contract it sort of works, right? So it is often effective. It is speedy. It is flexible as compared to the supply side policy. However, in the long run, overuse of such policy can undermine investments and it can bring a lot of problems because businesses फिर ज़्यादा टैक्स करोगे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड, क्राउडिंग इन का इफेक्ट नहीं आएगा, which is also one of the fiscal policy things that we've talked about. ठीक हो गया? So please make sure that you do take a look at these answers that I'm proposing. फिर बाद में और मजीद देखेंगे इसके ऊपर। Okay, जी. Another question. Now, this is again from the last 50 pages that we have. All right, let me take a question. Um, right, let me go back. एक crowding in का concept ये होता है, देखें जी, we understand fiscal policy monetary Keynesians को पसंद है, right? Fiscal policy is Keynesian domain. Monetary policy is new monetary, new classical approach. न्यू क्लासिकल कहते हैं फ्रॉम द लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जी फिस्कल पॉलिसी में तो क्राउडिंग आउट का प्रॉब्लम है। व्हेन गवर्नमेंट डज स्पेंडिंग देन वो पैसे भी बोरो कर लेते हैं बैंक से हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो पाकिस्तान के केस में हुआ है, और वो अपने प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग के प्रोजेक्ट्स के चक्कर के अंदर वो क्या करते हैं कि वो मैक्सिमम जो है स्टील और सीमेंट भी खरीदते हैं, उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस से भी compete आउट कर देते हैं। दैट दिस इज काउंटर, दिस इज क्राउडिंग आउट एज अ लिमिटेशन फिस्कल पॉलिसी की। लेकिन केन्जियन कहता है नहीं जी ऐसे तो नहीं होता, केन्जियन तो क्राउडिंग इन कहता है। क्राउडिंग इन इज कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्कूल्स पे, हाउसिंग के ऊपर, तो उससे क्या होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड्स बनेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर आएगा और कहेगा कि फैक्ट्रियां लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, बिजली आ गई है, गैस है, पानी है। सो दैट इज क्राउडिंग इन। केन्जियन obviously proposes that. ठीक है? तो you can suggest this as a like an it's a good AD को affect करने के लिए two-sided arguments that we can talk about here. ठीक हो गया? Excellent. With the help of a diagram, evaluate the effectiveness of the use of expenditure switching policy to reduce current account deficit on the balance of payment. Few terminologies you want to explain. Current account deficit क्या होता है? ठीक है? Usually we narrow it down. Current account deficit is when
exports are less and imports are more, when inflows are less and outflows are more, that puts pressure on the currency. Output नहीं है, outflow है, sorry, outflow. ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी क्या होती है? यू टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी. इसके अंदर यूजली आप टैरिफ, कोटास, ड्यूटीज इनके ऊपर रिलाई करते हैं. Devaluation in a fixed exchange rate is also one of the policies that you can use. ओके जी, तो इसकी जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, दे वांट सम डायग्राम फॉर इट आल्सो. एक तो हम वही एएस वाला डायग्राम बनाएंगे अपना टैरिफ वाला. यू रिमेंबर द टैरिफ वाला डायग्राम? So make sure it is the tariff wala diagram. Make sure that it is not one of those simple demand supply wale O level के standard वाला के tariffs are indirect taxes, तो supply को left पे shift कर दो. Domestic supply, domestic demand, domestic price, domestic quantity. Lekin the world price is on the lower side because you can import as much as you want from the world. ये वर्ल्ड सप्लाई हो गई. तो इतना सारा इंपोर्ट हो रहा है, हमें इस इंपोर्ट को ठीक करना है. तो जरा टैरिफ लगाते हैं. जब हमने टैरिफ लगाया तो वर्ल्ड सप्लाई में टैरिफ इंक्लूड जब हुआ, तो दैट कॉज्ड आवर लाइन टू जंप अप टू PW+T. उसकी वजह से इंपोर्ट की क्वांटिटी में रिडक्शन आ गया फ्रॉम Q3 टू Q4. तो वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स. इसका जब तुम काउंटर करोगे तो इलास्टिसिटी की बात कर सकते हो, कितना साइज ऑफ टैरिफ लगा है उसकी बात कर सकते हो. राइट, सो देयर आर टू थिंग्स. रीजनेबल, गुड इनफ, मैक्सिमम मार्क्स के लिए यू कैन टॉक अबाउट दैट. ठीक हो गया. फिर उसके बाद आप डीवैल्यूएशन की बात कर सकते हो कि किस तरह से डीवैल्यूएशन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इम्पैक्ट करेगा और उसकी वजह से फिर उसका इफेक्ट आएगा. तो लेट मी sort of give you the answer which I thought is a reasonable answer. थोड़ा सा इसको मैंने मैं okay, so let me do this. It's a very very long answer. This is just for a level 3 answer, maximum proposition कि क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करोगे. सबसे पहले हम जाते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की एक्सप्लेनेशन. विल गो इनटू द डिटेल्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड देन what does that deficit means. It's a bad thing, money is running out, all of that. Because remember, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी वैसे तो समझाना चाहिए मेरी नज़र के अंदर, बिकॉज इट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पार्ट ऑफ A2 नाउ, और एएस में ये असेस नहीं हो रहा होता. तो मेरे ख्याल में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 अकाउंट्स एक्सप्लेन करो, करंट अकाउंट के 4 अकाउंट्स एक्सप्लेन करो, फिर डेफिसिट को एक्सप्लेन करो. ठीक है, एंड देन व्हाट डेफिसिट, द प्रॉब्लम दैट डेफिसिट ब्रिंग्स. क्या? कि मोर मनी इज गोइंग आउट देन कमिंग इन, करेंसी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, कंट्री इन डेट जा सकती है बोरोइंग की वजह से. स्विचिंग पॉलिसी, हाउ इट विल हैव एन इम्पैक्ट. स्विचिंग के अंदर टैरिफ, डीवैल्यूएशन. टैरिफ की जो एक्सप्लेनेशन है उसका मैंने तुमको डायग्राम भी बना के पूरा प्रूफ कर दिया. हाउ टैरिफ्स वर्क, इट इंक्रीजेस द प्राइस, रिड्यूसेस इट. ठीक है जी, पूरी इसकी बात हो जाती है. फिर हाउएवर टैरिफ में ऑल्सो इंक्रीजेस द प्राइस फॉर कंज्यूमर, जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस गिर जाता है. इन माई डायग्राम इफ आई वांट टू शो दैट कंज्यूमर सरप्लस लॉस, इट इज दिस एरिया राइट हियर जो ओरिजिनल सरप्लस का हिस्सा था, बट नाउ इट इज अ लॉस. प्रोड्यूसर को मिल जाता है एरिया वन. एरिया वन कौन सा है? एरिया वन प्रोड्यूसर को मिल जाता है, एरिया 3 गवर्नमेंट को मिल जाता है, और एरिया 2 और 4 जो है वो बेसिकली इनएफिशिएंसी में चला जाता है. ये जो है ये इनएफिशिएंसी शो कर रहा है कि किस तरह से जब प्राइस बढ़ती है तो जो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स हैं वो बेचारे हार्म हो रहे हैं, और ये शो कर रहा है कि कैसे कुछ कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस की वजह से वो भाग जाते हैं, लेकिन ओवरऑल कंज्यूमर का ये पूरा लॉस है. तो ये हमारी पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन थी, एंड हाउ इट वुड हैव एन इफेक्ट. फिर आप डीवैल्यूएशन की बात कर सकते हो. डीवैल्यूएशन खासतौर पे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है, उससे
फॉरेन गुड की प्राइस महंगी हो जाती है, हमारी सस्ती हो जाती है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट गिरेगा। यहाँ हम सजेस्ट कर रहे हैं एडीएस का डायग्राम बना के शो कर सकते हो कि हाउ इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड। एंड वैसे तो तुम्हारा मामला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करंट अकाउंट का ही हल हो जाता, लेकिन डीवैल्यूएशन के अंदर यू गेट अ लॉट ऑफ स्टफ टू राइट रिगार्डिंग द मार्शल लर्नर्स कंडीशन। मार्शल लर्नर्स कंडीशन को एक दफा फिर याद करो, और फिर याद करो जे कर्व एक हमने पढ़ा था, द जे कर्व इफेक्ट, के हाउ शॉर्ट रन में इन इलास्टिक होता है, तो डीवैल्यूएशन कैन वर्सन बिफोर इट स्टार्ट मेकिंग एन इम्प्रूवमेंट। ये आपकी काउंटर आर्ग्यूमेंट हो रही है सॉर्ट ऑफ। फिर आप बात करेंगे कि टैरिफ अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल नॉट बी इफेक्टिव। तो आपने शो किया कि अगर आपके डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, तो इट विल नॉट हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, क्योंकि रिमेंबर अगर आपका इंपोर्ट इन इलास्टिक है, यू विल कंटिन्यू टू इंपोर्ट द गुड्स, राइट? सो देयर इज नो अदर ऑप्शन। फिर मैग्नीट्यूड एंड परसिस्टेंस ऑफ डेफिसिट, कि अगर आपका डेफिसिट कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है, तो टैरिफ लगाने से कोई खास आपका मसला हल होगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आप जहां टैरिफ हटाएंगे दोबारा आप डेफिसिट में आ जाएंगे, जो पाकिस्तान का भी केस है, राइट? फिर हो सकता है टैरिफ की जगह रिटेलिएशन आ जाए, वो रिटेलिएशन विल नॉट बी एबल टू improve your current account deficit, and that might actually worsen the whole thing, right? तो इस तरह से you will continue, and final मैं direct evaluation पे jump करता हूँ, you can read this in your own time. So while expenditure switching policies such as tariffs and devaluation can be effective tools in addressing a current account deficit, their success depends heavily on elasticity of demand. You see, मैं counter एक final conclusion दे रहा हूँ that I've talked about both things. So short run, long run की मैंने इसमें implication discussion किया है, and I can suggest an alternative policy. But remember one thing, what I've shown you right here is a level 3 answer. That means it's going to get you 16 and above. Okay, at least 16 and above. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली what has happened is कि हम इतना एक्सटेंसिव चीज़ों को पढ़ाते हैं that we have a habit of wanting to see, अच्छा ये भी लिख दे, वो भी लिख दे, फलाना भी लिख दे, but you know it's not that. It's a simple thing. Two people having a conversation with each other. One asks a question, the other one answers in a simplified answer, in a simplified way, uses the theory in a very simplified wording. All right. अगर कोई चीज तुमको नहीं समझ आई है, तो दैट मीन्स वो चीज तुम नहीं समझा सकते हो। तो कीप इट सिंपल। या तो उन चीजों को इस तरह से सीखो कि तुम उनको आसान लफ्जों में समझा सको। ठीक हो गया? यू वॉन्ट to qualify for a level 3, which means your answer should include every single bit. Okay? Once you include every single bit, the examiner has no choice but to give you a level 3 answer. Okay? AO1, AO2 के अंदर। हाँ ठीक है, तुमने डिटेल ज्यादा नहीं दी है, तो वो तुमको 11 दे देगा। लेकिन बिकॉज यू ट्राई टू आंसर एवरी सिंगल थिंग, योर आंसर क्वालिफाइज फॉर अ लेवल 3, उसमें लो साइड मिल जाएगा। बी हैप्पी विद इन 11। ऑलराइट, 11 इज गुड। फिर इवैल्यूएशन के अंदर, काउंटर आर्ग्यू के अंदर, अगेन वही लास्ट में कह रहा हूँ 60 पेजेस के ऊपर, हर बात मेरी लास्ट 60 पेजेस के ऊपर आती है। यू यूज दो 60 पेजेस फॉर इवैल्यूएशन मैक्रो के अंदर। माइक्रो के अंदर तो टॉपिक टू टॉपिक इवैल्यूएशन चेंज हो रही है। ठीक है? एंड दैट इज हाउ यू गोइंग टू कंक्लूड योर ओवरऑल थिंग। ऑलराइट, so I hope you had lots and lots of fun doing the paper. We'll continue to do this in every other class. ठीक है जी, so we'll stop here for the day.